Once you are done, send the answers on my WhatsApp. Guys, send the answers, whatever you have done till now.
Okay, Sarah, first one is correct. Second one, yeah, correct. Third one, fine. Fourth is also fine. Fifth is correct. Yeah. सिक्स्थ में आपने आंसर गलत लिखा है, देखिए डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना, आप हमेशा इसमें मिस्टेक कर जा रही हैं सारा. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर हियर सारा? 3. 3. तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन एटम्स होने चाहिए? 6. आपके में 6 है, देखिए काउंट कीजिए. रजान लुकिंग एट योर आंसर नाउ. फर्स्ट नहीं, पहला वाला भी सही नहीं है आपका. रिवाइज कीजिए रजान, बिल्कुल सेम. कैसे गलती कर सकते हैं आप? हाँ, रिवाइज करना चाहिए आपको. थर्ड एंड फोर्थ सही है. फिफ्थ आपने नहीं लिखा है. और आप ड्राई इथर लिखिए, ठीक है ना. डी हम लिख सकते हैं क्योंकि मेरा पेपर सीबीएसई चेक नहीं करने वाला है. ओके रजान, आपको ड्राई इथर लिखना है. हाँ. फातिमा, फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट, फोर्थ वन में अरे सिर्फ परऑक्साइड से काम चल जाएगा. एचबीआर नहीं डालना है आपको फातिमा. यस. एचबीआर भी डालना है ना. हाँ, फिर एचबीआर लिखिएगा तब तो. alcoholic OH and any right, that's correct, fine. And Wafia, okay, Ahmed, you have sent answer. Wafia, you have not sent me any answer till now. पहला नहीं किया. सेकंड आपका सही है, थर्ड आपका सही है अहमद, फोर्थ आपका सही है, फिफ्थ आपने नहीं किया, सिक्स्थ आपका सिर्फ ड्राई ईथर लिख दिया आपने भी. अरे भाई मेरे, सोडियम तो डालिएगा. ओके, सोडियम विल बी देयर. ओके, so first of all here it is concentrated H2SO4, conc H2SO4. अच्छा, दिस इज करेक्ट फॉर एवरीवन. आपके पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. पीआर क्लोरीन यहाँ लग जाएगा. बीआर एंड क्लोरीन यहाँ लग जाएगा. नाउ इट इज गोइंग टू गिव मी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, इसी वजह से सीधा एचबीआर लगा लीजिए. वर्क इज डन. In this case, it is anti-Markovnikov. That is why HBr and peroxide. And यहाँ पे we are going to use alcoholic KOH to get alkene. This is Wood's reaction, Na and dry ether. Okay, Mafia has sent me. First one is correct, second one is correct, third one correct. Okay, sixth आपने नहीं लिखा था. Okay. हाँ, फिफ्थ सही नहीं है आपका. वाफिया, फिफ्थ वन इज नॉट करेक्ट. कैन यू सी द रीजन? यस वाफिया, हाँ. Okay, so now we are going to learn about Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, and others also. Okay, write the topic. Alkylation. This will be reaction number 4, right? 3 किया ना हम लोगों ने अभी तक. Halogenation, nitration, sulfonation. Right. Friedel-Crafts alkylation. Now here, right, the introduction of alkyl group in benzene ring using appropriate alkylating reagent
The proper alkylating reagent is Rx. Okay, any alkyl halide we will use. We will use any alkyl halide to get an alkyl group in the benzene ring in the presence of a catalyst. The presence of a catalyst is called Friedel-Crafts alkylation. So let us see how it is happening, how it is going to happen in the case of haloarenes. We have a benzene ring. There is a chlorine here, or rather, wait a second. In general, any X here, any halogen atom, we are going to use any alkyl halide. यहाँ पे भी Rx लिख देते हैं, ठीक है? Any Rx in the presence of a Lewis acid. In the presence of Lewis acid, okay. What we are going to get? This X will be as it is. कोई change यहाँ नहीं. We'll get a R in the ortho position. We'll get the R in the para position. Okay. So this is the general reaction. You can write some examples. So AlCl3 is an example of Lewis acid. Similarly, what else we can have? You will draw the products, okay? I think आप लोग product खुद से बना लीजिएगा. Okay, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है? You have two carbon atoms. So the product is also going to attach what? The two carbon atoms. The Br will be as it is, and here you will get the two carbon atoms. Okay, plus Br and two carbon atoms in the para position. See, one carbon atom, two carbon atoms. थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं. Let us suppose we have something like this. See, here we have three carbon atoms, okay? 1, 2, 3 carbon atoms. And this is the carbon atom from which the attachment will take place. Br. And see, this is the position where the attachment will happen. Br. And like this. Okay, see one more example. If you have, for example, something like this. Br here. So in this case, what first of all, we are going to make a carbocation, right? Because we are going to have an electrophile. So the AlCl3 or the FeBr3, it is going to take away this Br, and you are going to get a positive charge here, okay? And as you can see in a carbocation, the adjacent atom here, this is what? 3 degrees. If you remember the rearrangement of carbocations, in that case, I have told you guys that if there is a on the adjacent atom of carbocation, if we have a 3 degree carbon, then the hydride shift takes place. So hydride will go here, and you will get a new carbocation, which is something like this. Positive charge, okay? And now this is going to react with your haloarene. And ये वाला जो carbon atom है, this is going to attach on the benzene ring, this carbon atom. Okay, so please see how the product is going to be made.
एंड मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पास पैरा पोजिशन वाला होगा बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इन द ऑर्थो पोजिशन. So see where what I'm doing here, I'm going to number it 1 2 3 4 and 5. आपको क्या करना है, this carbon atom is 3, आपको इतना पता है बस. आप देख रहे हैं कि 3 से क्या निकल रहा है, you have a 4 carbon atom that is coming from 3, then you have another carbon atom that is 5 that is coming from 3, then you have 2, ये क्या आपका 4 है, ये आपका 5 है, this is 2 carbon atom and 2 के बाद 1. ठीक है, तो लेबल करके बनाइए, प्रोडक्ट बिल्कुल आराम से बनेगा. Map the number of carbon atoms. Sir, can you explain this again? Yeah, sure. So see, first step में तो आपको पता है ना, we make the electrophile. If I have general Rx plus let us suppose we have AlCl3, then this chlorine is going to get here. जैसा कि आपके Cl और Cl वाले केस में था, हाइड्रोजनेशन में Cl एक गया था ना AlCl3 के पास, सेम चीज यहाँ पे भी होगा. ओके, same thing will happen here and you will be getting what? You will be getting a R positive, a carbocation. यहाँ पे can you see that we have FeBr3, Yes, sir. Yeah. right? And the Br is going to go to Fe. So FeBr4 negative हो जाएगा और positive charge will be there in this carbon atom, the red carbon atom. Now you see the red carbon atom, it is a carbocation, right? It is a carbocation. It is also what, 2 degree, and we have a 3 degree carbocation just adjacent to it. So if you remember the carbocation, आपको याद है the arrangement of carbocation? I've told you guys now. If there is 3 degree carbon, then the hydride shift will be there. If there is 4 degree carbon atom near to adjacent to the carbocation, there will be methyl shift. यहाँ पे क्या shift होगा? Hydride shift. And this is what? 3 degree carbocation. So obviously, once it has gone to 3 degree, it will not come back to 2 degree. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, this is your carbocation. This carbocation will be attacked by the benzene ring का ortho and para position. थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes or no? Please tell me. ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना? Yes, फातिमा? Yes, sir. आ गया? ठीक है. So could you scroll up हाँ, sure. to the first example? So in the first example, you wrote Br and then you wrote ClCl3. So how will we do that? नहीं तो Br से तो पोजीशन उसका रिलेशन ही नहीं है ना, ये Br तो ऐसे ही रहेगा बिल्कुल. There will be no change here Br. ठीक है, Cl आपको यहाँ लग जाएगा और Cl पैरा पोजीशन में लग जाएगा, है कि नहीं सारा? Okay, sir. ओके. इन जनरल भी आप देखिए ना, इट इज व्हाट X and any Rx. ओके, सो दिस कैन बी फ्लोरीन, ये आपका आयोडीन हो सकता है. ओके, देयर इज नो सच लिमिटेशन कि व्हाटएवर हैलोजन एटम इज प्रेजेंट वही आपका हैलोअल्कीन भी होना चाहिए. बोथ कैन बी डिफरेंट, बोथ कैन बी सेम आल्सो. ओ वेट अ सेकंड, सॉरी, हमने वहां पे Cl लगा दिया, माय बैड. यहाँ पे CH3 लगेगा, ठीक है, CH3 लगेगा, सॉरी. ओके, CH3 होगा, CH3. Okay, sir. ठीक है, वो गलती से मेरे निकल गया, आई डोंट नो हाउ. नॉट Cl. एल्काइलेशन हो रहा है, एल्काइल ग्रुप लगेगा. Sir, can you write the first one's answer? हाँ, श्योर. Br and यहाँ पे CH3, ऑर्थो पोजीशन पे CH3. This Br is as it is, and in para position there will be CH3. आपका सेम आंसर यहाँ पे भी होगा, बस Br की जगह क्लोरीन लगा रहेगा सेकंड वाले में. ओके, द सेकंड वन इंस्टेड ऑफ Br देयर विल बी क्लोरीन. सो ये एंटिटी जो है ना, दिस फ्रैगमेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पे CH3 ऐड हो जा रहा है. हैलोजनेशन कर रहे हैं तो क्लोरीन ऐड हो जा रहा है, नाइट्रेशन कर रहे हैं तो NO2 ऐड हो जा रहा है, सल्फोनेशन कर रहे हैं तो SO3H ऐड हो जा रहा है. दैट्स द ओनली थिंग हैपनिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
डन ऑल ऑफ यू? आंसर लिख लिया आपने? आंसर्स लिख लिया, नहीं लिखा? Done all of you? Yes or no? Please tell me. Not done. Done? Okay. इसका आंसर भेजिए मेरे व्हाट्सएप में। Hmm. 1 2 3 carbon, 1 2 3 carbon, 1 2 3 carbon. Yeah, correct. Alkyl group attach होगा, halogen नहीं. Write the product, guys. Write the product. Sara, your answer is correct. Okay. No, फातिमा, गलत. एक तो दो प्रोडक्ट बनाएगा ना, ऑर्थो एंड पैरा दोनों. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कौन सा कार्बन एटम होगा? हाँ बताइए बताइए. Para is major product. मेजर, Right? हाँ ठीक है, मेजर के हिसाब से आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी गलत है. आपने बेंजीन से देखी कितने कार्बन एटम अटैच किए हैं? अरे भाई मेरे, फातिमा आप बिल्कुल मार खाइएगा हमसे. ये लिखा है आपने 1 2 3 4, ये कार्बन एटम है.
सब भूल जा रही हैं क्या आप? फातिमा, हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल फातिमा? Yes, sir. कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे? 3. 3, तो 4 कैसे लिखा आपने? हाय हाय, क्या करें हम अब? क्लोरीन है जहाँ पे, वहीं पे आपने कार्बन एटम दिए, वहीं पे क्लोरीन और कार्बन में कोई बॉन्ड ही नहीं है ना? और रजा ने तो और घटा दिया, रजा ने 2 कार्बन कर दिया। अरे भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में गलती नहीं कीजिए, गिन सकते हैं ना आप लोग, ठीक है? तो उसमें तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यू कैन काउंट, राइट, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? यस रजान? And what will be the point of attachment? 1 carbon, 2 carbon, or 3rd carbon? Which will be attaching to the benzene ring? Which carbon? 1, 2, or 3? Which carbon? No answers. 2. अरे 3 का थर्ड वन फिर भी सही नहीं है आपका। फातिमा सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, मार खाइएगा आप बिल्कुल। ऊपर इतना सारा प्रॉब्लम हुआ, आपको समझ में नहीं आया कि क्लोरीन से ये करना है, ठीक है? दिस कार्बन इज गोइंग टू बी 3rd कार्बन, 2nd कार्बन एंड 1 कार्बन। दिस कार्बन इज गोइंग टू बी 3rd कार्बन, 3rd से जुड़ा हुआ 2nd है, उसके बाद 1 है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग, ध्यान से कीजिए प्लीज, ठीक है? छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं आप लोग। Friedel Crafts acylation. Please write the introduction of acyl group in benzene ring. In benzene ring, in the presence of suitable acylating reagent, acylating reagent that we are going to use is acid halide. And a catalyst. Catalyst is again going to be the Lewis acid. Is called Friedel-Crafts acylation. Okay, so for example, there is any halogen atom plus R, C double bond O, and X. In the presence of any Lewis acid. ठीक है, Lewis acid पूरा लिखिएगा आप लोग. You are going to get this X will be as it is in the ortho position. ये कार्बन के साथ आपका क्या होगा? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है. दिस X will leave. ये आपका कार्बन एटम, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है R, और क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड. ठीक है, सिमिलरली देख के मत लिखिए, ठीक है ना? आप लोग एक बार सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, उसके बाद खुद से आंसर लिखने की कोशिश कीजिए. छापने लगिएगा सिर्फ बोर्ड में देख देख के, स्क्रीन में देख देख के ना, तो फिर नहीं आएगा. आप क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है? कार्बन के साथ एक्स निकल गया, क्या लगा हुआ है? और डबल बॉन्ड ओ, एंड वी हैव आर अटैच टू दैट सेम कार्बन एटम. फॉर एग्जाम्पल, we have Br plus, let us suppose we have CH3, C double bond O, Cl, and in the presence of AlCl3, we are going to get two products. The
Benzene ring with bromine will be as it is. There will be no change here. In the ortho position, we will attach carbon. This carbon. Now chlorine has gone, so this will be having oxygen atom double bond, and there will be CH3 group attached. Plus, in the para position, listen to what I'm saying and apply it. Chapiye mat. C double bond O, and then CH3 is attached. Write the product for this and send the answer to my WhatsApp. ये तो कर लिया आपने. अब एक और सवाल लिखिए. चलिए डू दिस वन. ये सारा फातिमा दोनों का सही है. एंड जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स. आई एम कमिंग बैक. ओके, जब तक ये सवाल कीजिए आप लोग.
व्हाट हैपेंड अदर्स? बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ फातिमा, चलिए सही है, वेरी गुड। यस सारा, दैट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है। ओके वाफिया, लुकिंग एट योर आंसर। यस यस यस, वाफिया करेक्ट, दोनों सही है आपका। अच्छा, हमने आपको ऐसे दे दिया ना, अगर हम इसको ऐसे दे देते तो शायद आप लोग फिर कंफ्यूज जाते, है ना? हाँ ऐसे दे दे तो पक्का कंफ्यूज जाता है। रजान एंड अहमद, प्लीज सेंड योर आंसर्स गाइस। रजान ने, सारा ने भेज दिया, वाफिया ने, फातिमा, है ना? रजान एंड अहमद, प्लीज सेंड योर आंसर्स। नहीं रजान, गलत है। फिर से कीजिए रजान, दैट इज रॉन्ग। पहला वाला सही है आपका, सेकंड वन इज रॉन्ग। फिर से कीजिए। अहमद प्लीज सेंड योर आंसर्स। Ahmed, looking at your answer. Okay, for the second one, it is correct. Razan, send me once again. करेक्ट करके भेजिए उसको। हाँ अब सही है। समझ में आया आपको रजान कैसे होगा? Right, next. Okay, write a question. Haloarenes are less reactive towards electrophilic substitution reaction than benzene. Explain. Okay, than benzene. Let's see. In haloarenes, what do we have?
the benzene ring with a halogen atom. Okay, with a halogen atom. And for the halogen atom, this halogen atom is what? It is minus I. It pulls electron from the benzene ring, and if it is pulling electron from the benzene ring, तो benzene ring उतने अच्छे से attack नहीं कर सकता. If I compare the benzene ring like this without any halogen atom, then there is no one to pull the electron from the benzene ring, right? There is no one to pull the electron from benzene ring, so it can easily attack. This attack will be easy. Okay, this will be easy and it will be fast. Okay, it will be more reactive because there is no one to pull the electrons. And when the benzene ring is attached, when the halogen atom is attached to the benzene ring, then the halogen atom is pulling the electron because of higher electronegativity. And since it is pulling the electron due to higher electronegativity, it is less reactive towards electrophilic substitution reaction. Okay, so please write due to more powerful minus I effect of halogen atom, the electron density at benzene ring decreases. At benzene ring decreases. Which lowers the feasibility of attack on electrophile. And it further decreases the stability of carbocation formed during SE. Hence, haloarenes are less reactive than benzene towards electrophilic substitution reaction. ठीक है, यहाँ पे एक और आप देख लीजिए. One step that is common in all of the electrophilic substitution reaction is this benzene ring with a halogen atom, plus there will be an electrophile which is in need of electrons. Benzene ring attacks. This pi bond breaks. X here, and can you see the positive charge is just below X, right? These pi bonds are as it is, and here we are going to have the electrophile. Now this carbocation will be unstable because the halogen atom is pulling the electron, and in the presence of halogen atom, this particular carbocation will be what? Very unstable, right? Unstable carbocation due to minus I of X. Done everyone? सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? नहीं लिखा? नहीं लिखा? One minute. Okay, sure.
हो गया? लिख लिया सबने? यस अहमद, done. Okay, okay. Write another question. Halogen atoms are strong electron withdrawing group, but still they give ortho and para products. Explain. Okay, so please write the answer here. Halogen atoms are strong electron withdrawing groups due to powerful minus I effect. ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर दिया ये सबसे पहली बात कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों है, बट राइट द नेक्स्ट लाइन, but as they show resonance the electron density is higher at ortho and para position. अब जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर है तो अटैक कहां से होगा? अटैक वहीं से होगा. So please write the next point. As the reactivity, this is the last line is very important. As the reactivity is controlled by minus I effect and orientation, यानी कि प्रोडक्ट कहां लगेगा? Orientation is controlled by resonance. We get ortho and para products. ठीक है, तो जो बात थी माइनस आई, जो बात थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, दैट इज ओनली ड्यू टू माइनस आई, and minus I it does not control the orientation. The orientation is controlled by resonance. That is why we get ortho and para position. Okay, ortho and para position पे क्या मिलता है हमको? प्रोडक्ट मिलता है. So this question is very important. In place of hydrogen atom आपके पास यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्लोरीन atoms are strong electron withdrawing group, bromine atoms are strong electron withdrawing group, कुछ भी लिख सकते हैं. So in general हमने halogen atom लिखा हुआ है. Okay, and this question has come multiple times in the board examination also. लिख लिया सबने? yes or no, please tell me. Yes, sir. Done, sir. Done. Okay, and you want to leave Ahmed या फिर आज Yes, आपका मैथ्स sir. क्लास नहीं है? Yes, sir. Maths class है? I forgot. अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू. Now write the next topic.
nucleophilic, substitution of haloarenes. Write the first point. Haloarenes don't show SN at room temperature. SN at room temperature due to the following reasons. Number 1, partial double bond at CX due to resonance. अच्छा, एक चीज आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, SN का मतलब क्या होता है, ठीक है? I think you must have forgot what is SN. In general, जो nucleophilic substitution reaction होता है, in this case, when we are having haloarenes, it will be something like this. We'll have the haloarene plus there will be nucleophile, and this nucleophile will be substituting the halogen atom like this. यहाँ पे देखिए दो चीज होना जरूरी है. That is the CX bond should break. There should be the cleavage of CX bond. And the CNU bond is formed. ठीक है, तो सबसे पहला रीजन क्या है? Due to partial double bond at the CX, ठीक है? क्यों होता है CX से partial double bond? Because we are having resonance. And if you remember the resonating structures, we have shown you, right? Resonance hybrid structure, if you remember, last class में हम लोगों ने किया था. See this resonance hybrid? यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? CX bond is having what? Partial double bond character. Okay, and that is why it is difficult to break. Partial double bond at CX bond due to resonance is difficult to break. और SN होने के लिए ब्रेक करना जरूरी है. यहाँ पे आप लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, बाकी का खुद बना लीजिएगा आगे. Okay, further you can make. Right, next. Instability of phenyl cation. Okay, so for example, अगर हम ये बात करें that you have this halogen atom and it is going through SN1. So SN1 में क्या होगा? This bond will break and we should have some positive charge here like this. Now this positive charge, it is attached with all of these carbon atoms are what? sp2. This is also sp2, and if you remember, sp2 is what? More electronegative than the other sp3, and that is why this is very unstable. It is very unstable because sp2 carbons are pulling the electrons from the positive charge, and positive charge से electron को निकालिएगा, positive से आप negative निकालिएगा तो और positive बढ़ता जाएगा, right? That is why the charge density is increasing and the carbocatan is getting very unstable. Third point, repulsion between electron rich benzene and nucleophile. So benzene भी हमारा क्या है? Benzene is also electron rich and my nucleophile is also what? Electron rich. इन दोनों के बीच में क्या होगा? There will be
a repulsion between them. And if there is repulsion, the nucleophile is not going to attack on the benzene ring. Fourth point tricky. The sp2 carbon of CX bond does not have enough partial positive charge to attract the nucleophile. ठीक है, रिपल्शन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इफ यू रिमेंबर Rx में क्या होता था, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव. दिस डेल्टा पॉजिटिव वाज अट्रैक्टिंग द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक, बट now since this carbon atom that we are having in the benzene ring, it is sp2, or sp2 is also electronegative. This is also what, electronegative atom. इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज्यादा है नहीं, and that is why the nucleophile is not going to attract. The nucleophile is not going to attracted by this carbon atom, and that is why there is no particular reaction happening. ठीक है. So these are the 4 reasons why SN is not shown at room temperature. SN is not shown at room temperature. Write the next point. Haloarenes show SN at following conditions. Okay, so what you can do, you can either do a reaction at drastic condition, that means there will be high temperature and high pressure. High temperature से क्या होगा, जो partial double bond CX है हमारे पास, जो partial double bond CX है, that can break easily. That will happen due to high temperature. The bond breaking will be easy. And if we have high pressure, then even though the benzene ring and the nucleophile, they are repelling each other, due to high pressure, they will come into close contact and they can react with each other. That is why we need high temperature and high pressure. Okay. The another condition that we can use is, right, the second one, placing electron withdrawing group at ortho and para position, and या फिर और para position. What is so important about the ortho and para position? So if you remember, what will happen if I have an attack of nucleophile? Please see. We have a halogen atom, okay, and the nucleophile is going to attack. The nucleophile will attack on this carbon atom. इस कार्बन पे अटैक करेगा तो प्लीज ध्यान रखिए CX बॉन्ड नहीं टूटेगा. Which bond will break first? This pi bond is going to break first, because pi is the least strongest bond, I will say, right? It is the least strongest bond, and that is why what is going to happen. So we are going to get something like this. The nucleophile and the X both are here. We have a negative charge here, double bond here, and double bond here. Okay. Now again, resonance, negative charge will turn over to pi bond. Pi bond will become negative charge. X and nucleophile. यहाँ double bond, यहाँ negative charge, and यहाँ पे pi bond once again. As you can see, the negative charge is coming at the ortho position and the para position. Now, in order to stabilize this carbon ion, right? We have carbon with negative charge. If we have negative charge, then we will place an electron withdrawing group that will withdraw the extra electron. So, जो negative charge है ना, it will withdraw the negative charge. It will withdraw the electrons, making it more stable. If we will have electron withdrawing group,
the negative charge will decrease. If the negative charge will decrease, then the carbon ion is going to get more and more stable. Okay, so you can see that one more resonating structure will be there, and that will also have a negative charge on the ortho position. This pi bond will, first of all, this negative charge will become pi bond. This pi bond will become negative charge here. Negative. Here we have pi bond. This pi bond is as it is. Here we have the halogen and the nucleophile. Okay. As we can see, what is happening here? The negative charge is in which position? In the ortho and para position. That is why we want a electron withdrawing group which is going to stabilize this carbon ion on the ortho and para position. Please write as the negative charge is at, wait a second, negative charge likhiye. Negative charge appears on ortho and para positions. When electron withdrawing group is added on those positions, it will decrease the charge density and increase stability. They can also ask you a question why it will not like ortho and para pe क्यों place करते हैं. They can also ask why meta पे नहीं place करते हैं. So please write another point. When electron withdrawing group is placed on a meta position, then the negative charge does not appear at that carbon. Does not appear at that carbon atom, which contains the electron withdrawing group. Hence, the intermediate is not stable. Sn of haloarenes is possible. An electron withdrawing group is at ortho or para position. And is not possible electron withdrawing group is at meta position.
Done everyone? Yes or no? Please tell me. All of you wrote till here? Fatima, Razan, Sara and Wafia? Yes, sir. Okay. Now let us see. If we don't have any electron withdrawing group, that means plain and simple, what do we have? Some haloarenes such as chlorine. Then this would require what? And I'm doing aqueous NaOH. This is going to require what? High temperature and high pressure. Okay. एक सेकेंड, इसमें हम 2 स्टेप में बता रहे हैं, आगे में हम एक ही स्टेप में बताएंगे. ओके, सो हियर वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल 623 Kelvin and 300 atm of pressure. Okay, this is going to give me ONA. ठीक है. फर्दर सेकेंड स्टेप में क्या करना रहता है इसका? हाइड्रोलिसिस. HCl से रिएक्ट करा दीजिए या फिर आपको H+ in the presence of water. Okay, so that Na will be replaced by hydrogen. You will get OH. ठीक है. Now if I am going to have let us suppose one NO2 group, which is an electron withdrawing group, plus aqueous KOH or NaOH. Now this will require some heat. This will require some heat, and this is in the first step. In the second step, what we are doing? In the second step, we are adding H+ in the presence of water, which is going to give me OH. So we are going from, and this NO2 will be as it is. Okay, so the chlorine is getting replaced by OH. Right, next. We have 2 NO2 groups, aqueous NaOH. Again, this is also going to take some heat, but it will be lesser than the previous case. Some heat in the second step, H+ in the presence of water. Chlorine will be replaced by OH. These 2 NO2 are as it is. Now here you don't need anything. You will directly get the product. OH, NO2, NO2, NO2. इसका नाम क्या होगा? This is phenol. This is 2-nitrophenol. This is 2,4-nitrophenol. Sorry, 2,4-dinitrophenol. This is 2,4,6 trinitrophenol. Done everyone? Is so no, please tell me. Is everyone done?
इतना जल्दी तो नहीं कीजिएगा आप लोग, लिखिए आराम से लिखिए। चलिए, हो गया सबका? Done, sir. डन, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जो भी कम से कम कराया उनको एक बार फिर से कर लिया कीजिए घर में जाके, ठीक है? एंड देन अब हम लोग कब मिलेंगे? वी विल मीट ऑन नेक्स्ट मंडे, राइट? ठीक है, विल मीट ऑन मंडे। There is a small portion that I want you guys to watch, okay? I will send you guys the link. उसको आप लोग थोड़ा सा देख के आइएगा लास्ट, मतलब अगले क्लास के लिए। Will that be fine? Yes or no? Please tell me. A small Yes, sir. portion is there, है ना? We please watch that. Then what we can do now? Also one more thing, if you remember, method of preparation of haloalkane, method of preparation of haloarene, chemical reactions of haloalkane, and chemical reactions of haloarene. You should have these 4 pages. Okay, 4 या less, 4 से ज्यादा नहीं. 1 page for method of preparation of haloalkane, 1 page for method of preparation of haloarene, 1 page for all the chemical reactions of haloalkane. SN भी होना चाहिए उसमें. There should be elimination reaction also and the reactions with metal. Then the reactions of haloarene. Please prepare these 4 pages and then come in the next class on Monday. We will do all the conversions. Okay, we will do all the conversions and try to do all the questions in NCERT. जितने भी haloalkane haloarene के सवाल हैं, please try to do all of them except conversions. All the conversions we will be dealing on Monday. Okay, चलिए, thank you guys, thank you very much, bye bye, take care guys. Sir, you wanted to take extra class on Friday, right? Friday को? Yeah, you told that you wanted an extra class. बेंजीन ये बायोमोलिक्यूल्स के लिए क्या? No, for this chapter. दिस चैप्टर ओनली फ्राइडे को? ठीक है, ले लेंगे अगर No, आप you. लोग। हम You. नहीं, हम बोल रहे थे, ठीक है, हाँ ठीक है, अगर याद दिला दिया आप लोगों ने तो ठीक है, ओके फाइन, हम आप लोग को मैसेज आ जाएगा, Okay, ठीक है? sir. Yes, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम हनीफा, अस्सलाम वालेकुम रफ़त। ओके जी, डाउट्स बताइए आप लोग। डाउट्स हैं आपके पास या खाली हाथ आए हैं? यस, ओके। सो सेंड मी द डाउट, व्हाट्सएप में भेजिए, है ना। ओके, डिहाइड्रेशन वाला मैकेनिज्म। Yes, sir. ओके, इफ यू रिमेम्बर वी हैव डन दिस। आपको वो मैकेनिज्म चाहिए या फिर हम एक्सप्लेनेशन चाहिए? यस हनीफा। Sir, can you like explain? But you have this, right? Yes or no? Tell me. Yes, Hanifa. Yes, sir. Yes, okay. And in the next class, you said the full explanation. I think I would have explained this. Just a second then. So acidic dehydration of alcohols. Okay. So we have, I think the example they will be giving you will be CS ethanol ka dehydration, CH2 OH in the presence of H plus and some heat, 443 Kelvin to be exact. It is going to give you CH2 double bond CH2, right? So see, first step, number 1. Protonation of alcohol. We have CH3, CH2, oxygen atom with its lone pair electron and hydrogen. Plus we have H plus from the acid. We have H plus from the acid. Now electron source, oxygen atom, lone pair electron. This will attack the H plus atom like this, right? Electron source to electron sink, right? Electron rich to electron poor. We are going to get CH3, CH2, something like this. Yes or no? Please tell me. Okay. Now after this, what do you guys think? What is the next step? यहाँ पे positive charge आ जाएगा. Why? Because the lone pair electron is given by the oxygen atom to the hydrogen atom. So it is giving electron. That is why positive charge. Now what will be the next step? यहाँ पे क्या होगा बताइए? Whenever you form this type of entity, what happens? Whenever we form this type of entity, what happens, guys? Water will leave, yes or no? Correct. So we'll write the next step. Removal of H2O. So we have CS3. Now the removal of H2O, it happens, you can say like this. CH2, there is one hydrogen atom, single bond. Then we have the CH2OH and positive, right? Now
There are actually like there are two mechanisms which are possible here. Like in the single step, what can happen? Hydrogen atom is going to give the electrons to this carbon-carbon bond, and this will leave like this. So you will get CH2 double bond CH2. Okay. And we have formed the alkene, na? Yes. If you want to note this down, you can note this down. Sir, for the Daniel cell, do we have to learn the figure also? For what? Tell me. Daniel cell. Daniel cell. You have to remember the figure also. Okay. Acha, also see like I think 2 step nahi, I think you should have like 3 steps. अब वही दिक्कत है कि like यहाँ पे ऐसे कर लीजिए आप. Removal of water ही सिर्फ लिखिए यहाँ पे. Like this. So just CH3, CH2 positive. लेकिन generally ये बनता नहीं है because 1 degree carbocation is not very stable. Okay. So that's why generally this is not formed. लेकिन I think NCERT में आपके ऐसे ही दिया हुआ रहेगा. And in the next step, you are going to write deprotonation, or rather like deprotonation figure. Deprotonation. So यहाँ पे आपके पास CH2 है, just 1 hydrogen, CH2 positive. This hydrogen is going to give electrons, which will form CH2 double bond CH2 plus H positive as it is. Daniel cell me, you have to remember the whole thing. The electrodes. और यहाँ पे आप बत्ती बना लीजिएगा बस, या फिर you can add a voltmeter like this, and then there will be salt bridge. Okay, Rifat, you have sent some questions. हाँ, इसका तो आप खुद बताइए क्या होगा रिफत. हाँ, पहला वाला सवाल जो आपने भेजा है जिसमें व्हाट इज हैपनिंग, अल्कोहल से क्या बन रहा है, टेल मी. क्वेश्चन यू हैव सेंट ना रिफत. यस सर. हाँ, उसमें बताइए अल्कोहल है, उससे क्या बन रहा है आपका, जो क्वेश्चन मार्क आपने यहाँ पे दिया हुआ है. व्हाट इज फॉर्मिंग, which class of compound is that? भूल गए सब भूल गए आप लोग, है ना. जी बताइए. लेट मी शो हनीशा का. हाँ, वेरी गुड, एल्डिहाइड बन रहा है. तो रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे बताइए. व्हाट इज द रिएजेंट आई टोल्ड यू गाइस टू रिमेंबर फ्रॉम अल्कोहल टू एल्डिहाइड.
नहीं, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई, Lithium आवाज नहीं आई। aluminum. The उल्टा, lithium उल्टा। PCC? पीसीसी, पीसीसी। हनीफा, आप जो कह रही है ना, आप उल्टा जा रही हैं। एल्डिहाइड से अल्कोहल के लिए यू विल हैव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अल्कोहल से एल्डिहाइड के लिए पीसीसी। याद आया? Yes, right. Okay. गॉट इट? हाँ, ध्यान रखिए, ऐसे नहीं गलती कीजिए। ओके, नाउ रिफत, यू हैव सेंट मी सम क्वेश्चंस, लेट मी जस्ट कॉपी दैट एंड हाँ, जो ठीक से बोलिए, आप लोग की ना आवाज ही नहीं आती है, ठीक है? Sir, in that fourth one I have. फोर्थ वर्ड, ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? वेट अ सेकंड। The reaction of with NaOH, NaCH3 it forms। ये भी सवाल आपको कराया हुआ है हम लोगों ने। तो आपके ख्याल से क्या बनना चाहिए, बताइए रफत? टेल मी रफत, आपके ख्याल से क्या बनना चाहिए? Sir, I'm confused in C. Confused with C? ये आप लोगों को लग रहा होगा कि अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, ये कौन से टॉपिक से है? व्हाट टॉपिक, ये सवाल कौन से टॉपिक में होगा आपके नोट्स में, बताइए। रिएक्शन, देखिए यहाँ पे तो आपके पास अल्कोहल भी नहीं है, राइट? यस और नो? सो ना तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, ना तो ये केमिकल रिएक्शन है। सी, यू कैन सी दैट इन ऑल ऑफ दीज, आर यू सीइंग एनी अल्कोहल? No. कैन यू सी? नो, है ना? अच्छा, दूसरा ये आपको पक्की बात पता है कि ये कौन से चैप्टर से है? अल्कोहल फिनॉल ईथर से ही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो है नहीं, करेक्ट? Yes. राइट नाउ, दैट मीन्स इफ अगर अल्कोहल से नहीं है, आपका किससे हो सकता है? ईथर वाले क्लास से हो सकता है, राइट? ईथर से। नाउ दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ओके? एंड इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस आई हैव टोल्ड यू गाइस, डी बैच है आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर। कहाँ है विलियमसन ईथर सिंथेसिस? हाँ, कैन यू सी द रिएक्शन? रिफत, Yes. रिएक्शन दिखा आपको? कौन सा प्रोडक्ट होगा? Any? एल्कीन। एने? अरे एने No, नहीं है, yes. एल्कीन होगा ना, Yes. ठीक है? क्योंकि आई थिंक वहां पे यू हैव व्हाट, CH3ON है ना? हाँ, तो 3 डिग्री आपके पास, देखिए बता, 3 डिग्री RX होगा इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, देन दिस विल ऑलवेज लीड टू एल्कीन, ठीक है? सो हियर यू हैव 3 डिग्री हालो एल्कीन, इस वजह से यू आर गोइंग टू गेट एल्कीन, ठीक है? और एल्कीन विथ 1 लेस कार्बन, alkene with same number of carbon, sorry, not 1 less carbon, with same number of carbon atoms, with same number of carbons। आपका एक कार्बन बढ़ेगा नहीं, तो एल्कीन में आप देखिएगा ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, ये ऑप्शन हो सकता है क्या? बिकॉज दिस इज आल्सो एल्कीन, बट यू कैन सी हियर हाउ मेनी कार्बन्स, 1 2 3 4 5, राइट? 5 कार्बन्स, एंड हियर वी हैव ओनली 4 कार्बन atoms, only B is the right answer, D will be also not। टेल मी, सारे में डाउट है आपको या फिर कोई और? No, sir, for that question. Only that question, okay। Rifat, sorry, Hanifa, anything else? No, sure, that is all. No, that much only, okay। So guys, Sir, please,
हाँ बताइए I have one from electrochemistry only. क्या है, शॉर्ट में सेंड व्हाट्सएप में भेजिए। Conductivity of this much is this much. Methanoic acid is now calculate the molar conductivity and degree of dissociation. ओ ये हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है ना, Yes. राइट? ये हम लोगों ने Yes. नहीं किया। आई थिंक हमने किसी दूसरे बैच में शायद ना ये कराया होगा। यही है ना सवाल? Yes. ठीक है, तो ये हमने कब कराया? आपको हम लेक्चर भेज देते हैं एक सेकंड से पहले का। हाँ, आप लोगों को कॉलरॉश लॉ नहीं कराया आई थिंक। वी हैव डन टिल मोलर कंडक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी, इनफिनाइट डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग वीक, सेल कांस्टेंट वाला कर दिया था हम लोगों ने। वी हैव डन दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो 11 जुलाई का और 13 जुलाई का कुछ पार्ट जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, प्लीज सी कॉलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या कहता है? अगर आपके पास इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी Na+ की और जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी Cl- की, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। आसान बात बिल्कुल। यस और नॉट, प्लीज टेल मी हनी फाइन रेफर। कॉलरॉश क्या कहता है? कहता है कि NaCl का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा कब? इनफिनाइट डाइल्यूशन में। दैट मींस वी कैन राइट दैट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। एक और चीज, ये इस तरह से लिखिए आप, चाहे आप लिखिए इस तरह से। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब इनफिनाइट डाइल्यूशन। अगर हम जीरो लिख रहे हैं, नॉट लिख रहे हैं, तो मतलब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है जब आपके पास, तो डाइल्यूशन इनफिनाइट होता है, राइट? इफ यू हैव लीस्ट कंसंट्रेशन दैट मींस डाइल्यूशन इज इनफिनिटी। ये दोनों चीज सेम होती है। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द limiting molar conductivity of NaCl, this will be equal to the limiting molar conductivity of Na+ and the limiting molar conductivity of Cl-। ओके, बस इतना ही है कॉलरॉश लॉ में, बस इतना ही है। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, लैम्डा m ऑफ Al2SO4 इतना है, और लैम्डा नॉट m SO4 2- का कितना है आपके पास? 160 सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। कैलकुलेट किसके लिए? Al3+ के लिए। तो बहुत ही आसान है, आप देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपको क्या देगा? 2Al3+ प्लस 3SO4 2-, राइट? यहाँ पे हमको मिल गया। अब उसके बाद लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 विल बी इक्वल टू, हमारे पास एल्यूमिनियम कितने? ट्वाइस है, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा इंफिनिटी ऑफ Al3+ प्लस 3 इंटू डेल्टा इंफिनिटी या फिर डेल्टा 0 ऑफ SO4 2-। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास वी हैव दिस वैल्यू, yes or no? We have this value now, and we have this value, correct? Yes. तो आराम से आपके पास क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। yes or no, प्लीज टेल मी, है ना? इस तरह का आपके पास इक्वेशन हो गया ना, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3z। x आपको दिया हुआ है एंड z भी आपको दिया हुआ है, सिर्फ y फाइंड आउट करना है। yes or no? ओके, Yes. इस तरह के सवाल आपसे हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, तो एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा। ठीक है, देन दिस इज इफ यू आर हैविंग व्हाट, something which is strong electrolyte which dissociates completely. Now moving on, first of all, application of Colruy's law can be used for the determination of molar conductance of what? Weak electrolyte. All the organic acid, if you see methanoic acid, it is an organic acid. It's COOH. It is what? It is a weak acid. Okay, it's a weak acid, and what we are going to find its molar conductivity using what? Using the Colruy's law.
यूजिंग दी कॉलरॉस लॉ। ओके, यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स है कुछ, एंड लैम्डा नॉट ऑफ H+ दिया हुआ है आपको और HCO नेगेटिव दिया हुआ है। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन। इसके पहले लेकिन आपको ना लाइक देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू नो। मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, सी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, you have an idea, Rifat and Hanifa, what is degree of dissociation? Yes. क्या होता है, थोड़ा बताइएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? Tell me. Sir, I don't know the definition, but it's हाँ, alpha is क्या equals समझना? to lambda m by lambda naught m. अरे नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो मतलब ये डिराइव्ड है, ऐसे तो मतलब आपको ये इक्वेशन समझ में आ रहा है कि क्यों है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्यों है ऐसा? हाँ रिफर, टेल मी। No, sir. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, हाँ या ना, ये बताइए आप। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है? Yes. नो, पहली बात, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, इसीलिए तो इसको वीक बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? सबसे पहली बात, रिफत एंड हनीफा, ये सुनो प्लीज टेल मी। ठीक है, Yes, sir. वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, यानी कि फॉर एग्जांपल if I have 100 of molecules, if I have 100 of molecules of some weak electrolyte, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको क्या देगा? आपको यहाँ पे देगा कुछ पॉजिटिव आयंस, ये कुछ देगा आपको नेगेटिव आयंस। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, इफ यू हैव 100 ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, देन इट इज गोइंग टू गिव यू 100 पॉजिटिव एंड 100 अनाइंस। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 100 Na मिलेगा and you will get what? 100 ions of Cl negative. Yes or no, please tell me guys. So yes, sir. strong electrolyte के लिए. But if I have a weak electrolyte, then I will only get some fraction. For example, I will get maybe, I don't know, maybe I will get 50%, 50 of positive and 50 of negative. यानी कि जो 100 में था सिर्फ 50 ही डिसोसिएट हुआ, 50 अभी तक डिसोसिएट नहीं हुआ है। We have only dissociated, weak electrolytes have only dissociated 50%. 50% का मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ इट इज गेटिंग डिसोसिएटेड, या फिर आप अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको? 0.5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। तो कितना डिसोसिएट होता है? अल्फा डिसोसिएट होता है। कितना डिसोसिएट होता है? प्लीज टेल मी गाइस, Alpha कितना dissociation. डिसोसिएट? अल्फा डिसोसिएट होता है ना। अगेन अल्फा का मतलब क्या? आधा मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होता, half of that is going to dissociate। अगर आपके पास क्या हो जाएगा? Let us say for example if you have alpha is equal to 1/3, then 1/3 of the molecules are dissociating, यानी कि अगर हमारे पास 100 रहा मॉलिक्यूल तो हमारे पास 33 molecules dissociate होंगे। Please remember the concept of alpha is that the fraction of electrolyte that is getting dissociated, fraction of electrolyte that is getting dissociated। अच्छा, ये बात आप लोग को अब सब समझ में आ गई होगी। Okay, now let us understand where this particular formula is coming from, where this particular formula is coming up। Now please remember, at a particular concentration, कुछ atoms dissociate होंगे, कुछ atom dissociate होंगे। Now what is the total number of atoms that can be dissociated? अगर हम लोग, अच्छा एक और चीज, you remember ना, dilution करने पे क्या होता है? dissociation increase करते जाता है। Yes or no, please tell me guys। If I am going to dilute it, the dissociation will increase। Yes or no, please tell me। Yes. Right? Now if I am going to dilute till infinity, what I am going to do? Tell me. If I am going to dilute till infinity, I have diluted it completely. When I have diluted the weak electrolyte completely, all the electrolyte present in the weak electrolyte, they all will get dissociated। ठीक है,
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है इट डिसोसिएट्स व्हेन, वीक इलेक्ट्रोलाइट कब डिसोसिएट करता है? इंफिनिटी पे, जब डाइल्यूशन क्या हो जाए? इंफिनिटी हो जाए, then the weak electrolyte completely dissociate. That means if I want to know number of atoms or ions after complete dissociation, it can be referred by lambda m at infinity. क्योंकि मोलर कंडक्टेंस अगर हम मेजर करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो वो मोलर कंडक्टेंस विल बी ड्यू टू कंप्लीट डिसोसिएशन। बात समझ में आ रही है? ये सुनो प्लीज में, Yes. अगर हम लैम्डा एम मेजर करें किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, देन दिस विल बी ड्यू टू इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। बात समझ में आ रही है? इस प्लीज मी, फर्क नजर आ रहा है Yes. दोनों में? ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अगर हम करें तो इट विल बी व्हाट, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन की वजह से जो भी आयंस होंगे उनकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी दिखेगी। और अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे करें, देन कंप्लीट डिसोसिएशन पे जो आयंस मिलेंगे उससे हमको ये इनफाइनाइट वाला मोलर कंडक्टेंस मिलेगा। दैट मींस आई कैन से दैट इफ आई एम गेटिंग, अगर हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल होता तो हमको, अगर हमारे पास 100 वीक इलेक्ट्रोलाइट रहते, प्लीज लिसन वेरी केयरफुल, ठीक है, लिखिए मत कुछ भी, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। इफ आई हैड 100 वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो डिसोसिएट करने पे हमको कितना मिलता? 100 ही मिल जाता। ये सोनो प्लीज टेल मी गाइस, है ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो 100 मिलता ना। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? ये सोनो प्लीज टेल मी। Yes. ठीक है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हमको कितना मिल रहा था? 50 मिल रहा था, तो 50 कर दिया हमने यहाँ पे, राइट? एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हाउ मच वी आर गेटिंग? 50। नाउ इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? अल्फा। अब यहाँ पे आपको समझ में आया दैट दिस फॉर्मूला इज कमिंग फ्रॉम वेयर? लैम्डा सी, द लैम्डा एम ऑफ सी एंड लैम्डा एम ऑफ इंफिनिटी। गॉट इट? ये देखिए आपको हाफ आ रहा है, ठीक है, ये हाफ आ रहा है, ठीक है। नाउ वी नो नाउ द फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज व्हाट? lambda c, sorry, lambda m at a particular concentration, molar conductance at a particular concentration, and that is divided by molar conductance at infinite dilution. Molar conductance at infinite dilution. Now there is another formula that is from equilibrium chapter, जो आपका कहाँ पे था? equilibrium chapter कहाँ पे था आपके पास? class 11th में। and according to that k, that means equilibrium constant is equal to c alpha square upon 1 minus alpha, ठीक है। इससे आपको क्या मिल जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाता, ठीक है। लेकिन वो अभी हमारे पास, वो हमको नहीं देखना। हमको क्या देखना है? हमको देखना है ये अल्फा कैसे निकलेगा, ये अल्फा कैसे निकलेगा। अल्फा निकालने के लिए आपको क्या पूछा है यहाँ पे? एक तो मोलर कंडक्टिविटी चाहिए आपको, यानी कि यू नीड टू हैव दिस पार्ट, एंड द अदर थिंग दैट यू नीड टू हैव इज मोलर कंडक्टिविटी एज इनफिनिट डाइल्यूशन। ये दोनों अगर मिल जाए हमको तो अल्फा मिल जाएगा। सी, लेट अस सी हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है आपको? k इज इक्वल दी, अच्छा k दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, नहीं कापा दिया हुआ है, दिस इज कापा, राइट? हाँ दिस इज कापा, हाँ दिस इज कापा। conductivity, right? Conductivity of HCOH is equal to this much, 2.5 into इतना। lambda molar conductivity of H plus is इतना, molar conductivity at infinite dilution of HCO negative is इतना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट अल्फा एंड के, यही दोनों चीज बोला जाए, मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, कैलकुलेट अल्फा एंड लैम्डा एम, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, अच्छा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.0, ये तो आपको दिया हुआ नहीं, आपने ये सवाल गलत लिखा है। कंडक्टिविटी ऑफ इतना इज दिस मच, एक सेकंड कॉपी करते हैं सवाल को।
ये मेरा हैंग हो गया, एक सेकेंड। ओके conductivity of 0.0, that means conductivity kappa of 0.01 molar HCOOH is equal to 2.5 into 10 to the power minus 5 Siemens per centimeter। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन यहाँ पे ना ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 365.5 सीमेन पर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCOO नेगेटिव इज इक्वल टू 67.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड लैम्डा m ऑफ, चलिए ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बोला है किसका? HCOH का बोला हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्डा m इज इक्वल टू व्हाट? कापा इंटू 1000 डिवाइड बाई m, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? कापा आपके पास है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 डिवाइड बाई मोलारिटी क्या है? व्हाट इज द मोलारिटी? 0.01 10 to the power minus 2, so 2.5 into 10 to the power ये प्लस 3 होगा बिकॉज 1000 का 3 होता है ना, माइनस 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 2। आपके सवाल में -4 है क्या? आपने कॉपी पेस्ट कर दिया कहीं से, आप फोटो भेज दीजिए ना तो ज्यादा सही से दिखाई देगा। इसको चेंज करते हैं, -4 है यहाँ पे आपके पास, ये भी -4 है आपके पास, ये भी -4 है आपके पास, ठीक है। So what will be the lambda m? Lambda m will be -4 से यहाँ पर 10 बच जाएगा, so 2.5 into 10 to the power -4 plus 3 plus 2, ठीक है। What will be this? Tell me. 2.5 into 10. Yes or no? Correct. अच्छा एक सेकंड, 2.5 ठीक है ना, इंटू 10 ही होगा ना, इतनी शांति शांति क्यों है? यस ओके फाइन फाइन, ठीक है। आपके में डेटा कुछ अलग है लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कैसे आप कीजिएगा, राइट? यस सर। ठीक है ना, आप बस यहाँ पे आपके वही हमने अभी देखा कि आपके में डेटा है 5.25 है, ये आप उसी टाइम बोलती है ना जब हम कर रहे थे, तो ठीक है चलिए। आई थिंक दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, लैम्डा नॉट ऑफ एच प्लस इज ऑल्सो डिफरेंट, लेकिन आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगा दीजिएगा, ठीक है। ओके, यस सर। एंड देन व्हाट दे आर आस्किंग अल्फा, तो अल्फा क्या होता है आपका? दिस इज योर लैम्डा सी, जो भी आपके पास लैम्डा सी आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा सी यहाँ से आपको आ जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ HCOOH, इसके लिए दिस विल बी लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCOO नेगेटिव। लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस कितना दिया हुआ है आपके सवाल में? P49.5,
349.5 प्लस HCO नेगेटिव के लिए कितना दिया हुआ है 50.5 ना 50.5 दिस विल बी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी होगा आई थिंक दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 400 हो जाएगा राइट मोल इनवर्स अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा सी जो भी आपका यहां से आंसर आ जाए डिवाइडेड बाय 400 ओके ठीक है रिफत Yes, sir. नेक्स्ट आपका क्या है अच्छा वही आपने हमको इसमें भेजा है अच्छा 2.5 ही तो है आप इसमें ओके अच्छा अच्छा ये मतलब इस तरह से सवाल है आपका तो आपके पास जो ये आएगा ना इट विल बी लाइक दिस जो लैम्डा आएगा HCOH का दिस विल बी इक्वल टू कापा आपके में दिया हुआ है द कापा इज 5.25 into 10 to the power minus 5 into 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है 2.5 into 10 to the power minus 4 राइट Yes. यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा दिस इज योर लैम्डा सी इसको यहाँ पे इनपुट कर दीजिएगा तो एक सेकंड इसको कभी पे थे 5.25 डिवाइड बाय 2.5 into 10 to the power minus 5 plus 4 plus 3 so 2.5 and 5.25 कितना हो जाएगा ये 2.1 राइट 2 and 0.1 हाँ this will be 2.1 into 10 to the power minus 5 ये 7 है तो 10 to the power 2 this will be equal to 210 this is your lambda c of HCOH इसको यहाँ पे प्लग इन कर दीजिए 210 by 400 ठीक है so approximately 53-52% कुछ आएगा any other question tell me Rifat No, sir, that's all. that's all Hanifa what about you That's all. too. nothing else okay ठीक है guys thank you and we'll meet